My name is Sunil Indora. I am working as lecturer mechanical at SGV Government Polytechnic College, Bharatpur. Today we will start power generation, which is third year subject ME 305, chapter 1. First, we have to understand what is energy and what are the sources of energy and what is conventional energy, what is renewable energy. So let's begin. First, the definition of energy. Energy is capacity to do work. Energy is the primary and most universal measure for all kind of human activities. Everything what happens in the world is the expression of flow of energy. Energy is required in each and every work. Second, energy is available in different form. So energy, there can be various forms of energy that we can use for our purpose. And third, due to first law of thermodynamics, it is established that energy can neither be destroyed or nor can be created. It can be converted from one form into another form. So these are simple basic things about energy. अब एनर्जी जो होती है वो किसी न किसी सोर्स से प्राप्त होती है. एनर्जी के जो सोर्स हैं वी कैन क्लासीफाई इन टू ब्रॉड वेज. फर्स्ट इज प्राइमरी एनर्जी सोर्स, सेकंड इज सेकेंडरी एनर्जी सोर्स. प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होता है कि नेट एनर्जी की सप्लाई होती है, सप्लाई सोर्स होते हैं, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ. तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स कैन बी डिफाइंड एज सोर्सेज which provide a net supply of energy such as coal, oil, etc. These are the primary energy sources. Now what is secondary energy source? Secondary energy sources are the energy sources converted from or obtained from primary energy sources. Means primary energy source जो है उनको हम कन्वर्ट करके जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्स बोलते हैं. जैसे कि कोयला है, कोयले को थर्मल पावर प्लांट में बनाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है. कोल, पेट्रोल, डीजल आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी which is obtained from the coal or nuclear something is secondary energy source. These secondary energy sources are derived from the primary energy sources. So these are two broad classification. Now one more classification of energy sources based on its type or its characteristics. Either it is conventional or commercial source of energy or new or renewable source of energy. Conventional or commercial source of energy we are using for last so many years, for so many decades. These are the conventional energy sources such as fossil fuel, petrol, diesel, hydro, nuclear. These all are conventional or commercial source of energy, and these are mostly polluted. They emit pollutants and degrades our environment, such as petrol, diesel, hydro, nuclear, etc. Now, renewable source of energy are the new source of energy or renewable or exhaustible in nature.
These renewable source of energy are inexhaustible and are available in abundant quantity in nature. Most of these renewable energy sources are very either non-polluting or very less polluting. Some example of new and renewable source of energies are wind energy, solar energy, tidal energy. These all are new or renewable source of energy. चूँकि हमारे फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूशन भी करते हैं और इनके कारण और ये धीमे धीमे करके ख़त्म भी होते जा रहे हैं, इनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो धीमे धीमे करके हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में भी रिसर्च करते हैं और उनके बारे में काफ़ी आजकल रिसर्च चल रही है और उनकी खोज भी चल रही है और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो इनको, जिससे कि हम इनको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें. थैंक्स.